Hello students. Biology is a fascinating subject and also one of the most scoring subjects in the HSC board exam. My name is Ashutosh and I'm going to share with you some strategies that would help you prepare and perform well in the HSC board exam biology paper. Now I'm going to share these strategies in two videos. In the first video, I'm going to share with you some exam paper writing strategies that will help you excel on the day of the exam. And in the second video, I would be sharing with you year-long tips that you can use throughout the year to prepare for the final day. So as I said in the current video, I'll be sharing with you board exam paper writing strategies. And in this, the very first section that we have is the exam format basics. First and foremost, it is important that you understand the paper structure. So let's have a look at it. So what you see on the screen over here is what is the distribution of marks in each section. So your biology paper typically contains section A. If you see over here, it has objective questions, multiple choice questions as we call it. They are for 10 marks. Then it also has very short answer questions. They come for 8 marks. So the section A overall has 18 marks in all. Then we move to section B, which carries 16 marks in all. These are short answers. As you'll notice, section C also is short answers, but it has more marks for it, that is 24 marks. So section A for 18 marks, section B for 16 marks, and section C for 24 marks. And the final section, that is section D, carries 12 marks, but these are long questions requiring long answers. Okay, so I hope you have understood the distribution of marks throughout the biology paper. Now let's also have a look at how these marks are distributed chapter wise in the paper. So अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे चैप्टर्स में यहाँ जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स है और जो सर्कुलेशन रेस्पिरेशन का चैप्टर है, इसको सबसे ज्यादा मार्क्स है. वैसे ही अगर हम आगे बढ़े तो इन चैप्टर्स में आपको दिखेगा कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है और बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, इनको सबसे ज्यादा मार्क्स है. तो हमेशा हमें याद रखना है कि जिन टॉपिक्स को ज्यादा मार्क्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. एंड हमेशा एक बात याद रखनी है, दैट अ वेल राउंडेड प्रिपरेशन वुड एंश्योर दैट यू डू नॉट लूज आउट ऑन इजी मार्क्स दैट कम इन एनी ऑफ दिस सेक्शंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द वीडियो, व्हिच इज time management tips. Now, a key to completing your paper is not just writing it fast, but it is about efficient time management. तो ये कैसे कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपको you have to read the instructions carefully in the first 5 minutes of the question paper to understand it properly. Now, आप सोचोगे कि 1 मिनट, पहले 5 मिनट अगर मैं क्वेश्चन पेपर समझने में लगाऊंगा तो मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूं, और अगर मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूं 5 मिनट में, तो क्या मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊंगा? मैं वैसे भी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता. सो डज इट मेक सेंस टू स्पेंड द फर्स्ट 5 मिनट्स इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द पेपर? नाउ बिलीव मी, व्हेन यू स्पेंड द फर्स्ट 5 मिनट्स इन अंडरस्टैंडिंग द पेपर, what happens is that your mind registers a map of the entire paper, and that in fact helps you to come up with a plan of efficiently solving the questions in your paper. तो एक्चुअली जब आप टाइम स्पेंड करते हैं स्टार्टिंग में, तो यू आर बेटर एबल टू कंप्लीट द पेपर इन अ फास्टर पेस. सो पहले 5 मिनट क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड करना इज नॉट वेस्टेज बट एन इन्वेस्टमेंट. देन वन गोल्डन रूल दैट वी ऑल हैव टू रिमेंबर इज दैट कि एक मान के चले कि 1 मार्क के लिए मैं 1 मिनट डिवोट करूंगा. इफ यू कीप दिस रूल इन माइंड, then you can actually allocate time per section based upon the marks that are allotted for it. तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि you always have to prioritize the familiar questions first. Now what do I mean by this? एक गलती मैं अक्सर करता था कि मैं जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, I used to solve the questions in a chronological order. और इसका मतलब ये था कि कई बार मैं अनफैमिलियर क्वेश्चंस को फैमिलियर क्वेश्चंस के पहले सॉल्व करता था. Now फैमिलियर क्वेश्चंस तो इजी होते सॉल्व करने के लिए, लेकिन अनफैमिलियर क्वेश्चंस में आंसर्स रिकॉल करने में वक्त जाता है. और इसका मतलब ये होता था कि कई बार पेपर के एंड में मुझे वक्त नहीं होता था फैमिलियर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में जो मुझे और अच्छे से आते थे. तो एक स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखनी है
कि कुछ भी हो सबसे पहले फैमिलियर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। शायद वो क्वेश्चन पेपर के एंड में भी आते हो, लेकिन व्हेन यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस जो कि एकदम इजीली सॉल्व होता है, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड विद दैट बूस्टेड कॉन्फिडेंस, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू रिकॉल द आंसर्स टू इवन द अनफैमिलियर क्वेश्चंस मच बेटर। और फाइनल पॉइंट हमें याद रखना है कि ऑलवेज एलोकेट 10 मिनट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर टू रिव्यू योर आंसर्स एंड फिक्स एनी एरर्स दैट यू हैव। नाउ आप सोचोगे कि 10 मिनट, मेरा पेपर ही मुश्किल से खत्म होता है, मुझे 10 मिनट कहां से मिलेंगे एंड में? लेकिन बिलीव मी, इफ यू फॉलो ऑल द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड ओवर हियर, you would actually get to have 10 minutes towards the end of the paper to fix any errors and fetch those extra marks. अब देखते हैं कि एग्जाम में हमारी आंसरिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है that you have to start with easy questions, because एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्न करने हैं। So start with the easy questions so that at least ये जो मार्क्स है आप सिक्योर कर लें। एक बार जो ये मार्क्स सिक्योर हो जाए, then move on towards the challenging questions with a calm and focused mind. और हमेशा याद रखना है that एक आदत ही रखनी है कि we use keywords whenever you write answers, and you also use bullet points to structure your answers. This helps the examiner to understand your answer much more quickly. And finally, you have to remember that कोई अगर क्वेश्चन हो जिसमें लिखते लिखते मुझे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ मैं डायग्राम ऐड कर सकता हूँ, बट यू आर नॉट श्योर कि मेरे पास उतना वक्त है कि नहीं, तो leave some space over there and come back to that question during the review period at the end of the paper. अभी हमने आंसर्स को लिखना कैसे देख लिया, लेकिन उनको प्रेजेंट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। So now let's look at some presentation tips. So remember, how you present your answer can make a big difference. The first point to remember over here is that you have to write your answer in a neat and legible handwriting. एक मिस्टेक जो हम सब करते हैं कि स्टार्टिंग में एग्जाम पेपर में हम लोग काफी अच्छे हैंडराइटिंग से लिखते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर जब वक्त काफी कम होता है तो हम फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। तो एक अच्छी आदत ये हो सकती है कि एग्जाम के काफी पहले यू कैन एक्चुअली स्टार्ट रेगुलरली प्रैक्टिसिंग राइटिंग द पेपर। तो एंड यू कैन डू दैट इन अ टाइम्ड सेटिंग, मतलब आप एक टाइमर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको लिखने में कितना वक्त लग रहा है। अगर ये आप रेगुलरली करो तो यू विल सी दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द टाइम दैट इट टेक्स फॉर यू टू राइट द आंसर ड्यूरिंग द एक्चुअल डे ऑफ द एग्जाम। इसके बाद हम देखेंगे कि whenever that you are drawing diagrams, you see to it that you use a dark pencil and you label the diagram properly. अब मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है that a well drawn labeled diagram can actually fetch you extra marks. उसके बाद the thing to remember is that always underline keywords and key phrases to highlight your main points, because when you do that, it would help your answer to stand out for the examiner, and that could actually help you gain marks for your answers. And the final point to remember is that always ensure that there is adequate spacing between your answers to maintain clarity. Now the final section in this video is year-round practice. Remember that good exam day performance starts with year-round habits. So the very first point that you should remember is that practice solving past papers. A common mistake that people do, जो मैं भी अक्सर करता था मेरे कॉलेज डेज में, whenever my father used to be after me कि बेटा मॉक पेपर सॉल्व कर ले, मेरी सोच हमेशा ये रहती थी कि एक मिनट, मैं एक अगले हफ्ते अगर उसको सॉल्व करूं तो मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड रहूंगा और मैं ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। लेकिन try and understand that this mock paper is what you are solving at your home. तो अगर आप कम मार्क्स भी स्कोर कर ले तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं मॉक पेपर सॉल्व नहीं करूंगा ये सोच के कि मैं अगली बार ज्यादा प्रिपेयर्ड रहूंगा, यू विल एंड अप सॉल्विंग लेस मॉक पेपर्स एंड दैट वुड नॉट बी बेनिफिशियल। कैसे? बिकॉज व्हेन यू सॉल्व मॉक पेपर्स, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, you would realize that it would help you identify your mistakes very early, and that is what is important for you to work on your weaker areas. And then finally you have to remember that एक आदत ही रखनी है that whenever that you write answers, not just when you are practicing papers but even in a study session, जब हम सीख रहे होते हैं तो एक आदत ही रखनी है कि हम की फ्रेजेस को अंडरलाइन करें और हम अच्छे से नीट डायग्राम्स ड्रॉ करें, because that practice you would have to do separately. आप जब सीख रहे हो तब एक आदत लगाओ तो इसका फायदा आपको एग्जाम डे पे हो सकता है। Let's now summarize what we learned in this video. सबसे पहले हमने एग्जाम फॉर्मेट बेसिक सीखे,
फिर बाद में मैंने आपसे कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स शेयर किए, फिर हमने देखा कि आंसर को लिखना कैसे है और प्रेजेंट किस तरह से करना है, और आखिर में आई शेयर विथ यू ईयर लॉन्ग हैबिट्स विच यू कैन यूज टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। नाउ एक चीज यू माइट हैव नोटिस्ड दैट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो है प्रैक्टिस, एंड इसके लिए आई एम शेयरिंग विथ यू टू टारगेट पब्लिकेशन बुक्स, परफेक्ट बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये बुक्स बनाए इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, एंड आई होप यू विल फाइंड दिस बुक्स यूजफुल। सो बच्चों, आई होप you have liked this video and you have found it useful, and I hope all the best for your paper.